जय हिंद। तो देखते हैं एक न्यू टॉपिक, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है हमारा क्लास 12 का टॉपिक है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन विच विल बी सीइंग what happened after the Cold War, what was the next step that European countries took and how America helped in it. Also we'll be going to see the ASEAN and its role, its function, also the rise of Chinese economy and how is India and China relation till date. So let's see the topic further. ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्लान बनाया था अमेरिका ने, मार्शल प्लान। अब मार्शल प्लान था क्या? यूरोपियन इंटीग्रेशन। 1945 के जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 के बाद अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाया था विच इज़ नोन एज मार्शल प्लान। मार्शल प्लान इज़ मेड बाय अमेरिका टू हेल्प द यूरोपियन कंट्री टू गेट द इकोनॉमी stable back, and it was America help to European countries basically, because America was also gaining profit from European countries in a many ways, whether resources, arms और various many things। और इसके अलावा हमने OEEC बनाया था अमेरिका ने, जो मार्शल प्लान के अंदर ही था 1948 में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन समथिंग लाइक दैट। फिर यूरोपियन यूनियन, अब यहाँ से कोल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका का सपोर्ट मिला तो इसके बाद इसने एक स्टेबल इकोनॉमी कंट्री बन गई है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग हो गया, अपना एंथम हो गया और अपनी ख़ुद की करेंसी भी हो गई। 2005 में यूरोपियन इंडियन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इसका जो आर्म्ड फोर्सेस है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट। फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जो बना यूनाइटेड नेशन काउंसिल्स हैं हमारी यूएन की, उसमें फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं दे आर द परमानेंट मेंबर्स। इसके अलावा आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, ये बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन साइड में कंट्रीज़ हैं उससे डील करता है आसियान। तो आसियान 1967 में बनाया गया था, जिसमें 5 कंट्रीज़ मेंबर थे उसी रीजन के, जैसे मैंने कहा ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के, तो 5 कंट्रीज़ इसमें थे आसियान में, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड included थे। So these 5 are the countries which were the member of ASEAN, which was established in 1967, that is Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand। और एक एग्रीमेंट, जाहिर सी बात है कि अगर कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कोई नेशन बन रहा है, तो देयर मस्ट बी सम ट्रीटी और देयर मस्ट बी सम you can say that declaration। So yes, ASEAN had also डिक्लेरेशन कॉल्ड एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। मतलब ये आसियान बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन में साइन करने के बाद, ठीक है। मतलब बैंकॉक में इसकी मीटिंग हुई होगी, तो वहाँ पे बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हमारा आसियान स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद 2003 में आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर्स देखने को मिले। मतलब 3 और न्यू इंस्टीट्यूशन इसमें ऐड हो गए विच वॉज फंक्शनिंग फॉर आसियान, दैट इज़ आसियान सिक्योरिटी काउंसिल, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। And these were helping many people in many ways. The nation, like security, ASEAN Security Council was dealing with the security thing, like making country being safe from others country attack and all of that. So ASEAN Security Council was basically for the protection of its country, its territory, its people. ASEAN Economic Community was basically focused on the financial aid to gain as much as profit so that the country could survive in a good manner and people would get financial resources as per their need. So economic community was basically focusing on the financial thing of the nation. And socio-cultural, there was also ASEAN socio-cultural community which was focusing on the society and culture. So basically ASEAN became a very well planned kind of institution or organization which was functioning for its welfare of the country in a very good and suffice manner, which included for the 3 pillars of ASEAN community, which was ASEAN Security Council, ASEAN Economic Community and ASEAN Cultural Community.
इसके बाद आसियान का फिर अब क्या फंक्शन था। आसियान बेसिकली मेन रोल प्ले करता था टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस। कहने का मतलब ये है कि आसियान जो था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये एसोसिएशन है जो कि 1967 में बना था। तो ये इन सभी कंट्रीज़ के बीच में पीस बनी रहे, कोई इन पे अटैक ना करे, ये सब मेक श्योर करता था आसियान, ठीक है। न्यूट्रलिटी बना के रखता था हर नेशन के अंदर, कॉपरेशन बना के रखता था, नॉन इंटरफेरेंस, बाकी जो दूसरी कंट्रीज थी एक्सेप्ट दीज 5 मेंबर ऑफ आसियान, दे शुडंट बी अलाउड टू इंटरफेयर नीदर do anything for them whether good or bad. And then comes the FTA, free trade area for इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। बेसिकली फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया जो कि इन्वेस्ट करता था लेबर और सर्विसेज में, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर द इंटायर सोसाइटी एंड दे वर गेनिंग मच मोर kind of, you can say that, way to earn their livelihood. Also it was playing a very important role to raise the economy standard in European Union. So ASEAN overall is one of the best and most needful organization that has been built till date, you can say, and it has played numerous role in a very varied manner, and that too has been very successful. Now also when we talk about alternative center of power, so here alternative center of power basically means how the country is having the control, how they play role in the center of, you can say that, a united nation, right, where all the countries of the world come together, do their meetings. So here comes the, kind of, if we talk about here Southeast Asian, then the China can be a worth, discussable thing, because China also comes in the Eastern Southeastern Asian part. So now we'll be going to see how the rise of Chinese economy happened. कैसे चाइना की इकोनॉमी इतनी राइज हुई, मतलब कभी इतनी बुरे हाल थे चाइना के कि उनके पास फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम था, बट नाउ वी कंसीडर चाइना एज अ कंटेम्प, yes, sorry, we see China as a competition to America. Like China is now having a good hold on economy, a good hold on technology, a good hold on financial things. Also, trade, business, everywhere, whether education, China is having a command of itself nowadays in the world. So by seeing all that, it is more often compared with America, because America has been a very successful economy in the world. China was very low, but now is giving competition to its, even the people, the researchers, various United Nation organizations, big organizations are making assumption that China may overtake US by 2040. So how the rise of Chinese economy happened? Basically 1978 में China का जो economy थी, it started to explore its way, and the sign, just the way the people are making assumption that China will overtake US by 2040, means कि US को भी पीछे छोड़ देगा with its technology, with its research, everything like that. Also 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, किसके अंडर माओ, लीडर माओ इज़ अ Chinese people. So under leadership of Mao, Republic of China in 1949 were made. And इकोनॉमी जो थी किसकी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो इकोनॉमी थी, ये सोवियत मॉडल पे बेस्ड थी, ठीक है। मतलब जो सोवियत कम्युनिज्म को फॉलो करता था, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑल्सो अडॉप्टेड दैट। सो रिलेशन विद यूएस 1972 में जो हमारे चाइना के रिलेशन थे 1972 में, इट वॉज विद यूएस बेसिकली। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला चाइना में 1982 में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ 1988 में देखने को मिला। सो दिस ऑल हेल्प बेसिकली चाइनीज़ इकॉनमी टू ग्रो, बिकॉज पीपल नाउ invested in their own way, in their own requirement to get as much profit as they earn, because privatization is for individuality, not for publicity, right? So privatization helped, you can say, it plays a very important role in the rise of Chinese economy.
and privatization of agriculture in China happened in 1982, whereas privatization of industry in China happened in 1988. Now, if we talk about the alternative center of power, and here we are discussing China, which is a neighbor of India, then we must be having a glimpse of knowledge that what kind of relation does our country India and China have. सो here चाइना और इंडिया के रिलेशन कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे, लाइक नीदर पॉलिटिकली नॉर कल्चरली, पॉलिटिकल बेसिस पे ना कल्चर बेसिस पे, क्योंकि कल्चर भी इतना सिमिलर नहीं था और पॉलिटिकली भी तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए, वॉर देखने को मिली। से 1962 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया एंड चाइना का, इट वाज द नोट वर्दी कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। I mean, it is considered as one of the most famous war that could have been happened in the history. तो 1950 में चाइना ने तिब्बत जो है उसको टेक ओवर कर लिया। सो इसको लेके बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते रहते हैं अक्सर चाइना एंड इंडिया के रिलेशन को लेके, ठीक है, क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि वो हमारा टेरिटरी है, वेयर चाइना क्लेम दैट इट्स देयर टेरिटरी। सो इन 1950 तिब्बत को चाइना ने टेक ओवर कर लिया था। कॉन्फ्लिक्ट वही 1962 में जो चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दैट वाज वेरी डेंजरस, एंड also the diplomatic relation between China and India are not that good. In 1976 it was seen that mid 1970 में चाइना ने अपनी पॉलिसी बहुत पावरफुल कर दी, रीजनेबल एंड लेस आइडियोलॉजिकल। चाइनीज पॉलिसी बिकेम मोर रीजनेबल एंड लेस आइडियोलॉजिकल। अब मिड 1970 से चाइना ने ध्यान दिया कि हमारी पॉलिसी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल नहीं होगी। 1981 में चाइना एंड इंडिया ने कुछ मीटिंग्स की, आपस में बातें की। सो सीरीज ऑफ टॉक्स हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1981। ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट चाइना in 1988 to make sure that the thing should be get sorted and both the countries come together, work together, be the supporter of one another, because being a neighboring country, it was a needed thing, it is a needed thing. So Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India, also visited China in 1988 to settle down the things. All right. Then also we talk about bilateral trade between India and China, which was not really good, but now in today's world, if we talk about 2024, India and China, both the countries are trying their best to uh, get sorted the things and cooperate as much as they can between each other. So yes, this is the thing which comes under alternative center of power. I hope it's clear that how European country got badly affected by the Cold War, and how when they fall down, the America came as a supporter, as a true friend, to help European country, because America was also gaining profit out of it. So somehow America had helped Europe, and it made European Union, which was an integration of many countries, and it was basically after 1945, and thus after that Europe became a stable economy, stable country in the world, which not only became just a you can say stable economy, but world's largest economy in 2005, which can be considered as a huge achievement for Europe. Also, the armed forces of Europe is second largest in the world, and in you can say that UN Security Council, the two very most famous permanent member are France and Britain. So I hope it's clear. Thank you. Do like, share and subscribe and comment down. Thank you.